इधर से तो रिस्पॉन्स नहीं आया। कब स्टार्ट करूं? We are live. Start. 1, 2, 3. Start. Good evening everyone and welcome to another edition of Ask Max Expert live session. Today we have Dr. Chandragoda, Senior Director and Unit Head Medical Oncology at BLK-Max Super Speciality Hospital, New Delhi. Dr. Chandragoda specializes in medical oncology, pediatric oncology, cancer care oncology, uro-oncology, pediatric medical oncology and more. Today, he will share experts' insight on the difference between immunotherapy and chemotherapy. So doctor, over to you. Thank you very much. I am Dr. Chandragoda. The questions on this particular live sessions are welcome and I will be happy to answer them. So we are going to first ask the questions in there. Sir, this will go, so you have to give an opening note for the live session. Okay, so the opening note here is that there are many aspects of treatment when it comes to a cancer. So one is, I will be just dealing with the chemotherapy and immunotherapy here. Chemotherapies are drugs which are mixed in the glucose and are infused. So chemo is not just a cancer specific. Usually it acts on the rapidly dividing cells. Definitely there are some chemotherapies active in some cancers, some are not. So however, the recently in last decade or so, there is an evolution of immunotherapy. For example, we have soldiers to guard our country, and now the immunotherapy is the one which are our soldiers in the body to kill any infections or the cancer cells. So the immunotherapy, by giving immunotherapy, you are activating these soldiers who are actually sleeping, kind of that. So you can just take it that way. So these soldiers are activated to kill the cancer cells. Down the line we will discuss the intricacies of this, the differences, where it is active and where it is not. Thank you, doctor. So we have a couple of questions coming in from the audience. The first question is immunotherapy a replacement for chemotherapy or do they sometimes work together? It is not a replacement. They work together or in isolation. It depends on the scenarios or the cancer we treat. कौन सी कैंसर में क्या इलाज है वो बहुत सारे टेस्ट के बाद पता चलेगा. बायोप्सी में हमें ये जांच पड़ताल करेंगे और डिसीज़ बर्डन कितना है, कौन सी टाइप की कैंसर है. सो उस आधार पे ट्रीटमेंट तय होती है. इम्यूनोथेरेपी किसको देना है, इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन कितना किसको देना है, ओनली कीमोथेरेपी किसको देना है, ये आपको अपनी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बेहतरी से समझाएगा. We have next question, which is how does immunotherapy actually train the immune system to fight cancer? So I'll just go into the background where हमारे ट्यूमर सेल्स कितने क्लेवर होते हैं जो हमारी इम्यून सेल्स को अवॉइड करें. सो मान लो एक हमारे लिवर कैंसर है. सो लिवर कैंसर की सेल्स पूरा लिवर में भरे पड़े हैं और हमारी इम्यून सेल्स को वो दिखते नहीं हैं, तो उसमें कोट हो जाती है. तो इसको हम PD1 और PDL1 मैकेनिज़्म बोलते हैं. इसके अलावा बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं जो ये कवरिंग से ट्यूमर सेल्स जो हमारे सोल्जर्स को दिखते नहीं हैं. तो इसीलिए ये जो ब्लॉकर्स है PD1 और PDL1 ब्लॉकर्स देंगे तो आम तौर पे ये दिखना बेहतर शुरू हो जाएगा और इनमें जो हमारे इम्यून सेल से ज़्यादा जाके ट्यूमर सेल्स को अटैक कर पाएंगे. हमेशा 100% श्योर नहीं होता, उसका बहुत सारे कारण हैं. ठीक. सो दिस इज़ इन नटशेल सेइंग दैट कि ये कीमो इम्यूनोथेरेपी और सोल्जर्स की इंटरेक्शन के बारे में जिक्र करेंगे. थैंक यू डॉक्टर. अनदर क्वेश्चन वी हैव इज व्हाई डू सम पेशेंट्स रिस्पॉन्ड एक्सट्रीमली वेल टू इम्यूनोथेरेपी व्हाइल अदर्स डोंट? सो अब हम इस पहलू को समझा रहे हैं. अभी भी समझ पूरा 100% समझ में नहीं आता, बट देर आर सम बायोमार्कर्स, उसको हम बोलते हैं बायोमार्कर्स. बायोमार्कर्स किस में टेस्ट होती है, बायोप्सी में. और ट्यूमर टिश्यू लो, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर इम्यूनोथेरेपी का
अगर कोई भी कंपनी का जो भी इम्यूनोथेरेपी होता है उसका कुछ पर्टिकुलर मार्कर्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम उसको PDL1 बोलते हैं, उसको PDL1 CPS स्कोर और TPS स्कोर, ये स्कोर के आधारित इम्यूनोथेरेपी का रिस्पॉन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट होता है। बहुत 100% श्योरिटी भी नहीं होती, लेकिन दिस इज इन नटशेल कि ये एक रिस्पॉन्ड मार्कर है। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक प्रोफाइलिंग करें ट्यूमर का, उसमें भी कुछ मार्कर्स होंगे जो इम्यूनोथेरेपी के लागू होंगे, कुछ मार्कर्स होंगे जो इम्यूनोथेरेपी के रेजिस्टेंस होते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी के लागू के जो बारे में PDL1 के बारे में मैंने जिक्र किया, उसके अलावा TMB, सो दैट इज ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन, एक और पैरामीटर है जो इम्यूनोथेरेपी के लिए सहायक होगा। The next question is, are the side effects of immunotherapy really milder than chemotherapy or is that a myth? In a large majority it's true, क्योंकि जो हेयर फॉल होगा, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हमारे हेयर्स होंगे या हमारे मुंह के छाले होंगे या बावल होगा, जो लघु इमोशंस, स्किन टॉक्सिसिटी होगा, ये कीमोथेरेपी से ज़्यादा होते हैं। इम्यूनोथेरेपी से होता है लेकिन बहुत कम हो गए। सो इसमें यूजुअली ज़्यादातर ऑटो इम्यून फिनोमेना बोलते हैं, जो मैं सब्सिक्वेंटली एक्सप्लेन करूँगा, तो वो है। लेकिन अब आमतौर पे डेफिनेटली कीमोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट्स इम्यूनोथेरेपी का कम होता है। The next question is, can immunotherapy be used for all types of cancers or only specific ones? Currently, the immunotherapy has been used in almost all cancers, barring a few cancers where it is not found to be active. So again, whether it has to be used in the first line, second line, or with the chemotherapy, that all a medical oncologist will tell you. What I can say now here is that in large majority of cancers, yes, immunotherapy is one of the forerunner in the treatment of choice. Thank you, doctor. Another question we have is, if someone has already taken chemotherapy, can they still switch to immunotherapy later? Yes, there are guidelines. For example, be it head and neck cancer, फर्स्ट लाइन में हमने कीमोथेरेपी दिया है, कुछ बहुत सारे लोगों को इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं। अगर उसमें दोबारा वापस बीमार रहते हैं तो हम इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। स्विच की बात जहाँ तक बात आती है, यूजुअली बहुत सारे चीज़ों में नहीं होता। पहले हम इम्यूनोथेरेपी देंगे, तब कीमो बंद करके इम्यूनोथेरेपी कंटिन्यूएशन होगा, या बीमारी को पहले हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं और बीमारी बढ़ जाती है सेकंड लाइन में, कुछ कैंसर्स में सिर्फ इम्यूनोथेरेपी भी शुरू किया जा सकता है गाइडलाइंस के मुताबिक और ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। स्विच मेंटेनेंस इम्यूनोथेरेपी का कुछ बहुत ही ये नहीं है अहम रोल, बट यस, पहले यूज़ करो, उसको कंटिन्यूएशन करो। The following question is, how do doctors decide which treatment is right or for a particular patient? जब भी पेशेंट्स आते हैं, उनका तीन पहलू में हमें डिस्कशन तीन क्वेश्चंस आंसर करनी पड़ेगी। कौन सी टाइप बीमारी का नाम, कौन सी कैंसर का नाम पहले पता रहना चाहिए। क्या हेड एंड नेक से शुरू हो रहा हो, लंग से शुरू हो रहा हो, ब्रेस्ट से शुरू हो रहा हो, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से शुरू हो रहा हो, तो उसमें कौन सी टाइप की कैंसर है और उसके स्टेज क्या है और उसकी ट्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और डिसीज़ बर्डन, फॉर एग्जांपल कहाँ बीमारी है, उसकी बर्डन कितना है, उस आधार पे हमारे ट्रीटमेंट चॉइस होगी। क्या हम कंबाइंडली दे सकते हैं इम्यूनोथेरेपी, सिर्फ इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, ये सारे चीज़ें इतनी छोटे प्लेटफॉर्म में या अभी अब आपके सामने जिक्र नहीं कर सकता, ताकि ये 1-to-1 डिसीजन होगा डॉक्टर के और पेशेंट्स के और पेशेंट अटेंडेंट के सामने, क्योंकि ये इट इज़ नॉट सिंपल टू एक्सप्लेन दैट ईच कैंसर हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, staging, burden, and all the characters should be taken into consideration. Then it will be explained what is the best treatment for that particular patient. Thank you, doctor. Another question we have is hair loss more common with chemotherapy than immunotherapy? Yes, it is. As I've already explained, because it acts on the rapidly dividing cells, chemotherapy, majority of the chemotherapies do cause hair loss. Immunotherapy usually doesn't cause hair loss. On to the next question. Does immunotherapy work faster or slower compared to chemotherapy? It depends on, again, a characteristics. For example, if I say MSI is one of the parameters, which I forgot to state earlier, MSI, microsatellite instability. MSI high is the only parameter where immunotherapy works better. So if MSI is high, these are the patients who respond rapidly to immunotherapy. Barring this,
immunotherapy works a bit slowly, and chemotherapy acts a bit faster. Thank you, doctor. Another question we have is, are there specific tests or biomarkers that determine whether immunotherapy will work? Yes, as again I have stated earlier, one is PDL1, combined proportionate score, that is CPS, or PDL1 TPS, MSI, and TMB, that is tumor mutation burden. These are three indicators of response, direct or indirect. MSI is the strongest amongst these markers, and there are some resistant mechanisms which will be revealed in comprehensive genomic profiling, and those will be explained by the treating medical oncologist. On to the next question. Is immunotherapy suitable for elderly patients or those with weaker immunity? That is not the case here. It is not about immunotherapy is active in somebody who's got a less or more immunity. So the parameters of determination of immunity from the patient perspective and the doctor's perspective is completely different. So in elderly, they are not fit for chemotherapy. So we probably have to give a less stringent treatment, and in that immunotherapy is one of the important domain of a treatment. So it is not true for every cancer. Yes, especially in some cancers like lung, single agent immunotherapy can be offered. Thank you, doctor. Another question we have is, can immunotherapy cause the immune system to attack healthy organs? How Yes. common is that? It is seen in between 4 to 5% of the patients. So it's not that common, it is very, very rare, but still we see it. So what happens is that when our own tumor cells would recognize our own cells, the other organ cells as a foreign, and then they attack it. So hence some patients, in around 5% of the patients, so they may have hepatitis, like the liver, if the liver is attacked, and if lung is attacked, that's called as interstitial lung disease. And most commonly endocrinal complications like thyroidism, hypothyroidism, hypopituitarism, hypocortisolism, where steroid levels in the blood comes low. So hence we monitor all these things while giving immunotherapy. We have another question. Is immunotherapy considered more expensive than chemotherapy? And is it widely accessible in India? It is widely accessible, and definitely it is very, very expensive. And now there are two aspects of it. If we talk about multinational companies, MNCs, they have come up with patient assistance programs to make it more affordable for Indian patients. That's one. And second thing, thanks to the Indian companies who have come up with Indian in collaboration with China, so we can come up with molecules which are indigenously manufactured immunotherapies. They have reduced the cost to a larger extent. So that is good news, that they're coming up. The market is bombarded with a lot of Indian immunotherapies now. We have another question. In which stage of cancer is chemotherapy preferred over immunotherapy? It is not a preference in a particular stage. Again, it depends on which cancer you are treating and what is the stage. So it's a combination of both. They work together integratedly rather than in isolations. There are some scenarios where each of them would work differently. So barring that, they are actually work hand in hand. The following question is, looking ahead, do you think immunotherapy will eventually replace chemotherapy in most cancer treatments? Unlikely. So very unlikely. They, as I said, they work hand in hand. They have to go hand in hand. So in some cancers, yes, a single agent immunotherapy do help, but in large majority, it is a combination which is making a trick. Thank you very much, Dr. Dadotkar, for your valuable insights and precious time. Please share a concluding message that you would want to pass on to our audience. So nowadays, cancer is increasing in incidence. Down the line, it is going to surpass a lot of other entities like cardiovascular infections also. So it is increasing day to day, and I am also noticing good knowledge about the patients, about the cancer incidence and the